timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty
There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time,
I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set-off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible.
Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines.
I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Viksit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods.
Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit, or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans, and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. Item number 3, माननीय वित्त मंत्री जी. Item number 2, sir. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 4, माननीय वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है. माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरे स्थापित करें. Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्य, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है. बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है. सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. वर्ष 2026 पर उपस्थापित होईछि साधारण बजेट. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण वर्तमान बजेट उपस्थापित कर सारी सहित बजेट उपस्थापन होगा सहित गृह को मुलतवी घोषणा करा जायछि एवं बजेट्र सबुठु बड़ दिग कौन बा टॉप 10 पॉइंट आपणक टीवी स्क्रीन रे बजेट्र प्रतिटी दिग उपर आमे नजर रखिथिलु. वर्तमान बजेट्र 10टी बड़ कथा बा बड़ दिग कौन रही आम आपको देखा. चमड़ा सामग्री सस्ता होगापी जाऊँगी बजेट रे ए संक्रांत रे घोषणा करा जायछि. डायबिटीज एवं कैंसर औषध मध्य सस्ता हेबो. सेहि भली कैंसर रो 17टी मेडिसिन सस्ता होगापी जाऊँगी. सस्ता हेबो. गंभीर रोगर 7टी औषध ए संक्रांत रे निया जायछि बड़ पदक्षेप. सोलार एनर्जी मध्य सस्ता होगापी जाऊँगी. बजेट रे यार प्रतिफलन होईछि. सेहि भली बैटेरी सस्ता हेबो. अन्यपटे
बजेट रे बैटेरी सस्ता हेबा सहित चमड़ा सामग्री मध्य सस्ता हेबो। बजेट रो 10टी बड़ दिग बा बड़ कथा वर्तमान आपणक टीवी स्क्रीन रे ओडिशा रे विरल मूर्तिका खनिज कॉरिडोर निर्माण करबा नै सरकार रखिछंती प्रस्ताव। कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्रा उपरे मध्य विभिन्न प्रकार स्कीम करा जायछि। सेमीकंडक्टर 2.0 पई दिया जायछि प्रस्ताव। बायो फार्म पई 10,000 कोटी टंका निवेश हेबो। एसएमई प्रोत्साहन पई 10,000 कोटी टंका प्रस्ताव दिया जायछि। सेहि भली छोट उद्योगींक पई 2,000 कोटी टंका व्यवहार करा जायछि। इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड मध्य गठन करिवे सरकार। 7टी नुआ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पई योजना रही। 2027 वर्ष पई कैपेक्स 12.2 लाख टंका करा जायछि। सेहि भली सिटी इकॉन रीजन स्कीम पई मध्य व्यवहार करा जायछि। ए होछि बजेट रो 10टी बड़ कथा बा बजेट रे केउ सब घोषणा करा जायछि तार चित्र तार लेखाजोखा वर्तमान आपण सामने। कारण बजेट को नहीं अनेक चर्चा होता, अनेक लोकंकर बहुत किछि अपेक्षा रही है। एसबू भितर बजेट 2026 उपस्थापित हो सारी। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रेकर्ड 9म थर पर बजेट उपस्थापन करिसेंती। एवं बजेट रो प्रमुख दिग बा बजेट रो हेडलाइंस कौन वर्तमान आपण टीवी स्क्रीन रे नड़िया उत्पादन बढ़िबा पई प्रमोशनल स्कीम हाथ को नहीं सरकार। 15टी ऐतिह्य स्थलीर विकास करा जिवो। अर्थात ऐतिह्य स्थली किभली भाव में विकास करा जिवो से दिगरे मध्य सरकार योजना करिसेंती। या बाद भेटनारी कॉलेज एवं हॉस्पिटल मध्य निर्माण करा जिवो। ए संक्रांत रे मध्य सरकारंकर बड़ प्लान रही। ओडिशा रे विरल मूर्तिका खनिज उपरे मध्य कार्य करा जिवो। ओडिशा रे कार्यक्षम हेबो जातीय आकाश मार्ग। सेहि भली तालचेर एवं अनुगुल सहित हेबो संयोगीकरण। कलिंग नगर सहित संयोग हेबो पारादीप एवं धामरा। बंदर संयोगीकरण उपरे मध्य फोकस करा जायछि। देशर सबु जिल्ला रे बालिका हॉस्टेल निर्माण करा जिवो। अर्थात बालिकांक उपरे फोकस एवं बालिका केमिति हॉस्टेल रे रहिबे ता उपरे गुरुत्व दिया जायछि। आयकर रिटर्न फॉर्म उपरे मध्य सरलीकरण करा जायछि। एप्रिल 1 तारिख रु लागू हेबो नुआ इनकम टैक्स। छोट करदातांक पई आसीछि नुआ स्कीम। ITR 1 एवं ITR 2 आयकर दाखल शेष तारीख रहिबो 31 जून। विदेश रे पाठ पढ़ा TCS 5% रु 7% पर्यंत जोगाइबो। आयकर देथिबा लोके प्रथम कैटेगरी रे विदेश थिबा संपत्ति मध्य घोषणा करिबा बाध्यतामूलक। द्वितीय कैटेगरी विदेश रे थिबा संपत्ति घोषणा करि नथिबे 6 मास भितरे विदेश रे थिबा संपत्ति सेमाने घोषणा करिवे। NRI संपत्ति बिक्री उपरे TDS को ह्रास करा जायछि। ए दिगरे मध्य बड़ पदक्षेप। आयकर रिटर्न फॉर्म आहुरी सरल हेबा पई जाउछि। सरकार ए संक्रांत रे योजना करिसेंती। एप्रिल 1 रु नुआ आयकर आईन लागू हेबा पई जाउछि। छोट करदातांक पई आसीबो नुआ स्कीम। अर्थात ITR 1 एवं ITR 2 आयकर दाखल करिबा पई ए व्यवस्था करिसेंती सरकार। बजेट रो प्रमुख दिग चमड़ा सामग्री आहुरी सस्ता हेबो। ए संक्रांत रे सरकार करिसेंती घोषणानामा। डायबिटीज एवं कैंसर औषध मध्य आगामी समय रे सस्ता हेबा पई जाउछि। कैंसर रो 17टी मेडिसिन सस्ता हेबो। ए संक्रांत रे बजेट रे घोषणा करा जायछि। 7टी औषध जहाँ कैंसर पई आवश्यक ता उपरे सरकार फोकस करिसेंती। एहा बाद सोलार एनर्जी उपरे मध्य सरकारंकर गुरुत्व रही। बैटरी मध्य सस्ता हेबा पई जाउछि। एहा बाद बायोगैस मिश्रित CNG मध्य दाम कमिबो बा रेट खसिबो। बैटरी तैयारी सामग्री उपरे सीमा शुल्क छाड़ पई निष्पत्ति नैछंती सरकार। सेहि भली बड़ खबर हेउछि मद हेबो महंगा। अर्थात मद उपरे अतिरिक्त टिकस देबा पई पड़ी पारे बा मद उपरे अधिक खर्च करिबा पई पड़ी पारे। तेणु आगामी समय रे मद बा अल्कोहोलिक युक्त सामग्री रेट बढ़िबा पई जाउछि। एपटे आयकर फांकिले जेल बदल रे वर्तमान जरिमाना नै निष्पत्ति नैछंती सरकार। आयकर रिटर्न फॉर्म आहुरी सरल हेबा पई जाउछि। जेमिति जनसाधारण सहज भाव में आयकर फाइल करि पारिबे से दिगरे सरकार गुरुत्व दैछंती। छोट करदातांक पई आसीछि नुआ स्कीम। आयकर स्लैब रे किंतु कोनोसी प्रकार परिवर्तन होई नाही। अर्थात जे माने नुआ रे अछंती बा नुआ ढांचा रे आयकर भरुचंती पूर्व भली 12 लाख पर्यंत जीरो फाइल करिवे एवं 75,000 रो स्टैंडर्ड डिडक्शन पाई पारिबे। अर्थात पूर्वरु आयकर रे जहा थिला वर्तमान ताहा ही रहिबो। कोनोसी प्रकार परिवर्तन होई नाही। किंतु जो माने टिकस फांकुथिले सेमानंकु जेल जिबा पई पडुथिला एनिके सेमानंक उपरे जरिमाना लगाइबे सरकार। तेबे बड़ खबर आयकर को नहीं जो सब आकलन चलीथिला चर्चा चलीथिला से सबुरे वर्तमान पूर्णछेद पड़ी। कारण आयकर स्लैब रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन होई नाही। किंतु आयकर रिटर्न फॉर्म को आहुरी सरल करिबा पई जाउछंती सरकार। एप्रिल 1 रु लागू हेबो नुआ आयकर नियम एवं एथिरे छोट करदातांक पई नुआ स्कीम आनिछंती केंद्र सरकार।
आयकर स्लाब रे कोनोसी परिवर्तन होई नाही अर्थात पूर्व भली 12,75,000 पर्यंत जदि आपणकर रोजगार अच्छी ताहेले जीरो टिकस आपण फाइल करिवे। वर्तमान बजेट सरिबा परे यूसीसीसीआई बा उत्कल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पक्षर एक सांबादिक सम्मेलन आयोजन करा जायछि। सेमाने बजेट को नहीं कौन कहउचंती बा बजेट संक्रांत रे कौन प्रतिक्रिया आसुची आसंतु सुनी नबा। आपणकर बहुत बहुत जरूरी आम तापाई अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आम डेवलप करने कारण रोड रे कंजेशन अधिका हो जाउछि। तेणु आमर रेलवे हो आपणकर इनलैंड वाटरवेज हो ये दुटा ओडिशा को allocation अधिका आसीबो एवं सेटा डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर मध्य मेंशन करिसंती। तापरे आम जदि देखिबा आमर उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जोटा फोकस एरिया एमएसएमई सेक्टर पे मध्य स्पेसिफिक से कहते विभिन्न इनसेंटिव मेजर्स विभिन्न आउ जोटा कहते एसएमई ग्रोथ फंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ग्रोथ फंड प्राय 10,000 कोटी टंकार से गोटे फंड क्रिएट कर एसएमई को सपोर्ट करने ताको इनसेंटिवाइज कर टेक्नोलोजी एडॉप्शन कथा कहूँ केमती एसएमई इजियर एंड चीप क्रेडिट केमती से माने पाई परिवे तांका हाथ को लिक्विडिटी आसीपर तांका प्रोडक्ट को केमती से माने मार्केट करें तापाई जेम जो आमर गवर्नमेंट इ मार्केट प्लेस रही सागर लिंक करने को प्रचेषा करा एवं ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हम जमी आगर कही तापाई तांको सब आड़ू सपोर्ट जमी फंडिंग रे इजियर हम टेक्नोलोजी एडॉप्शन मॉडर्नाइजेशन होगापाई टू स्केल अप देयर प्रोडक्शन तापाई से माने केमती इजियर फंडिंग पाई इनसेंटिव पाई व्यवस्था है कॉर्पस फंड गोटे 10,000 कोटी टंकार भी तैयारी होती प्रोडक्ट को मार्केट करने आहरी सरलीकरण कराई जेम सहित लिंक करके तेणु सहीटा गोटे मेजर से आप देखा गले इंफ्रास्ट्रक्चर आ एसएमई ना आमर एमएसएमई ये दुईटा सेक्टर ओडिशा पाई बहुत इम्पोर्टेंट तापर विशेष ध्यान दि जाइए। बजेट घोषणा होगा परे स्टॉक मार्केट उपरे मध्य यार एक बड़ प्रभाव देखा मिली कारण स्टॉक मार्केट आम देखुले सकाल हलचल होता अर्थात आज बजार खोलिबा परे एवं जेतेबेले बजेट उपस्थापन होईछि स्टॉक मार्केट रे मध्य एक बड़ धरणर संशोधन होईछि एवं निफ्टी रे पाखापाखि 435 पॉइंट वर्तमान सुधा ह्रास पाइथिबा बेले 24,890 रे पहुंची भारतीय निफ्टी से भली सेंसेक्स 80,990 रे वर्तमान ट्रेडिंग करूछि एवं सेंसेक्स रे मध्य पाखापाखि 1.5% रो ह्रास आमे देखुछि अर्थात 1225 पॉइंट पाखापाखि सेंसेक्स रे खसिछि। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रे 23 पॉइंट ह्रास पाई तेणु आज स्टॉक मार्केट उपरे जो मानकर नजर रही जो माने शेयर किणा बिका करुथिले सेमाने मध्य अनेक मात्रा रे निराश होइथिबे एवं जो माने स्टॉक मार्केट रे निवेशकारी थिले सेमाने मध्य आज अनेक परिमाण रे निजर टंका हराइछंती कहिले भूल हेबो नाही। वर्तमान सुधा पाखापाखि सेंसेक्स रे 1.21% ह्रास घटिथिबा बेले निफ्टी रे 1.31% वर्तमान ह्रास घटिछि एवं 330 पॉइंट तलकू खसी निफ्टी कारण मार्केट आरंभ आज आम देखुले जितेबाला बजेट गोटे पटे उपस्थापन होता एपटे मार्केट आरंभ होता से समय आम देखी मार्केट पॉजिटिव को आसीथिला मार्केट प्रायतः 100 पॉइंट रु अधिका बढ़ी किंतु अकस्मात पुणी थे शेयर मार्केट खसबार लगी वर्तमान ताजा अपडेट निफ्टी 24,970 रे ट्रेडिंग करुथिबा बेले वर्तमान 1.37% ह्रास घटी अर्थात 340 पॉइंट रु अधिक खसी निफ्टी से भली सेंसेक्स मध्य 1,000 रु अधिक पॉइंट ह्रास घटी वर्तमान 81,200 उपरे ट्रेडिंग करुछि सेंसेक्स। तेणु मार्केट मध्य गोटे प्रकार आज धराशायी कहले भूल हम ना बजेट गोटे पटे उपस्थापन होता बेले आशा करा जाउथिला भारतीय मार्केट हयतो ऊपर को उठी पारे किंतु प्रतिबदल में आम देखुचे मार्केट वर्तमान धीरे धीरे तलकू खसुची जहाँ निवेशकारी एक चिंतार विषय नियति आज विभू रविवार बजेट उपस्थापन होता आज रविवार मार्केट मध्य खोला थिला शेयर मार्केट खोला थिला तेणु निवेशक माने बड़ा आशा करथिले कि केंद्र सरकार बजेट जिते उपस्थापन हम से मार्केट से कौन रिटर्न देव किंतु एबे देखा मिलूँ कि मार्केट निरुत्साहित रही मार्केट खसी अर्थात सेंसेक्स और निफ्टी उभय वर्तमान ह्रास परिलक्षित होता जमापड़ी तेणु आज ये बजेट प्रभाव सीधा सीधा मार्केट पर पड़ुवार देखा मिलूँ से निफ्टी हो
सेंसेक्स हो उभय जगह एवं मार्केट क्रैश कर मार्केट ह्रास होइतबार देखा मिली। तो बजेट पर मार्केट क्रैश करिछि। आज बड़ नजर थिला निवेशक मानक उपरे जेतेबेले बजेट रे इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं बड़ घोषणा कर दाउथिला जेतु कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़िबो एवं वित्तीय श्रृंखला बढ़िबो तापरे आहुरी ग्रोथ करिबो एमएसएमई सेक्टर हो किंबा विभिन्न उद्योग हो से माने आगो को अधिक मार्केट तांकर एक्सपांड करि परिबो अधिक से माने ग्रो करिवे एवं यार फलाफल शेयर मार्केट उपरे कोन पड़िबो तापर मध्ये नजर रहिथिला किंतु शेयर मार्केट सेते उत्साहजनक आज रहिनी निरुत्साहित फलाफल देखा मिली। बजेट ये प्रभाव शेयर मार्केट रे पड़ी जो शेयर मार्केट एवं तलमुहा रही मार्केट क्रैश होइछि बजेट आगत पर। अन्यपटे आयकर उपरे रही थाए समस्त नजर एवं आयकर उपरे आशा रही आकलन करा जाउथिला होइतो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ी पारे आयकर सीमा बढ़ी पारे किंतु ए सब उपरे केंद्र सरकार चुप रही अर्थात अर्थमंत्री स्पष्ट करिसंती कि आयकर सीमा रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन हेबो नाही किंतु आयकर पैठ करबा केमिति सरल होई पारिबो अर्थात रिटर्न फॉर्म केमिति सरल एवं सहज होई पारिबो ता उपरे सरकार गुरुत्व दैछंती। कारण आमे देखिथिले गत वर्ष बजेट रे घोषणा करा जाइथिला आयकर सीमा 12 लाख पर्यंत अर्थात नुआ टैक्स रिजिम रे ता सहित 75,000 टंकार स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाइथिला अर्थात 12,75,000 टंका पर्यंत आपणकर जदि रोजगार अछि ताहेले आपण कोनोसी टिकस पैठ करिवे नाही एवं चलित थर मध्य ताहा ही बलवत्तर रहिबो कारण इनकम टैक्स स्लैब रे बा स्टैंडर्ड डिडक्शन रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन होई नाही। एहा बाद जुलाई 31 तारिख आयकर रिटर्न रो शेष दिन बा शेष समय रखा जाइछि एवं आयकर स्लैब रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन होई नाही आ आयकर देउथिबा लोकंक पई दुईटी व्यवस्था करा जाइछि। अच्छा विभुरंजन एबे ये बजेट आगत पर कौ जिनस सस्ता है कौ जिनस महंगा है तार मध्य चित्र आम आनिबा डायबिटीज और कैंसर परी रोगर मेडिसिन गुड़िक सस्ता हे बोली कहुई कैंसर 70टी मेडिसिन उपरे और सीमा शुल्क लागू हेब नाही तेणु महंगा होइछि मद और बैटरी सस्ता है मद एवं रेट बढ़ी 2035 सुधा न्यूक्लियर पावर कथा कहला बैटरी सस्ता हेब जोता मध्य सस्ता हेब डायबिटीज और कैंसर परी रोगर मेडिसिन सस्ता हो बोली आशा थिला एवं पुणी थे बजेट रे से भली प्रतिफलन देखा मिली 70टी कैंसर मेडिसिन उपरे सीमा शुल्क लागू होना जो तार रेट कम 2035 जो व्यवस्था रही से परिवर्तन होती बैटेरी तैयारी सामग्री गुड़िक सीमा शुल्क छाड़ कर तेणु बैटेरी रेट कम बायोगैस मिश्रित सीएनजी सस्ता है एयरक्राफ्ट निर्मित सामग्री उपरे सीमा शुल्क छाड़ कर सामरिक विमान निर्माण सामग्री उपरे आमदानी शुल्क छाड़ हेब सुना और रूपा महंगा हेब बोली कहुछि 2 ରୁ 3 दिन धरी सुना रूपार दर कमी आसुथिला किंतु आज बजेट पर पुणी थे कहुछि कि सुना रूपार दर महंगा हो पारे। विभुरंजन ये बड़ अपडेट आज बजेट उपर समस्त नजर रही क्यों क्यों जिनस गुड़िक सस्ता हे क्यों क्यों जिनस महंगा हे बिल्कुल उदित एवं सब बेले जनसाधारण अपेक्षा रही थाए बजेट पर कौन सस्ता हे कौन महंगा हे तेणु आम दर्शकों को पूरा चिठा देखा चेष्टा करुचु सरकार घोषणा पर बजेट उपस्थापन पर यार प्रभाव विभिन्न द्रव्य बा विभिन्न सेवा उपरे कौन पड़ पारे 2035 न्यूक्लियर पावर गुड्स टिकस छाड़ करा जाइछि। बजेट उपस्थापन पर एक स्पष्ट कि बैटेरी एवं जोता सस्ता हेबापई जाउछि से भली डायबिटीज एवं कैंसर मेडिसिन मध्य सस्ता हेबो बजेट रे यार मध्य प्रतिफलन होइछि कैंसर रो 17टी मेडिसिन उपरे लागिबोनी सीमा शुल्क से भली मद आहुरी महंगा हेबापई जाउछि एवं अन्यपटे बैटेरी आहुरी सस्ता हेबापई जाउछि अर्थात सरकार किभली भाबरे पोल्यूशन फ्री रहिबो समाज बा पोल्यूशन फ्री केमिति हेबो ता उपरे फोकस करि आसुथिले एवं बजेट रे मध्य यार प्रतिफलन आमे देखुचे से भली स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में डायबिटीज एवं कैंसर मेडिसिन मध्य आगामी समय सस्ता हेबापई जाउछि कारण कैंसर रो 17टी मेडिसिन उपरे सीमा शुल्क सरकार छाड़ करूछंती जहा फल रे मेडिसिन रो दाम कमिबो एवं जे माने मेडिसिन किणुचंती सेमानंक पॉकेट को मध्य कम बाधिबो से भली बैटेरी एवं जोता मध्य आगामी समय सस्ता हेबापई जाउछि कारण ए दिगरे मध्य सरकार बड़ पदक्षेप नैछंती एवं सबुठु बड़ खबर हेउछि डायबिटीज एवं कैंसर रोगी जो माने अछंती जो मानकर संपर्क अछंती सेमानंक पई ए खबर निश्चय आश्वस्ति प्रदान करिवो कारण कैंसर रो प्राय 17टी मेडिसिन आहुरी सस्ता हेबापई जाउछि। बजेट रो बड़ 10 कथा ओडिशा विरल मृत्तिका खनिज बाबद चिंता कर बजेट रे कंस्ट्रक्शन और इन्फ्रा उपरे स्कीम हेबो
सेमीकंडक्टर 2.0 प्रस्ताव दि जाइछि बायो फार्म 10,000 कोटी निवेश रही ये बजेट बड़ दश कथा एसएमई प्रोत्साहन 10,000 कोटी टंका दि जाउछि छोट उद्योगी 2,000 कोटी टंकार व्ययबराद होइछि इन्फ्रा रिस्क ग्यारंटी फंड गठन करा 7टी नुआ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर योजना करा 2027 वर्ष कैपेक्स 12.2 लाख कोटी सिटी इकोन रिजन स्कीम बड़ व्यवहार तेबे बजेट ये बड़ 10 कथा आम सामना को आणुचु केउ क्षेत्र में एथर बड़ व्यवहार केंद्र सरकार तरफ केउ क्षेत्र गुड़ी को अधिक गुरुत्व दि जाइए जमीक विकास और रोजगार टैक्स उपरे समस्त नजर थिला टैक्स रे सेमती किछि जदि बड़ परिवर्तन हेइनी किंतु सरलीकरण करने को चेष्टा करा जाइछि ता सहित आउ केउ उद्योग गुड़िक जेहेतु कैपिटल एक्सपेंडिचर अधिक बढ़ी अर्थात खर्च अधिक बढ़ाइबे भित्तिभूमि आरंभ कर विभिन्न प्रकार क्षेत्र में केंद्र सरकार तरफ खर्च बढ़िबो एवं यह अर्थनीति को आहरी गतिशील करिवो जो कथा बारंबार कहा जाउथिला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर केते रहइबो एथर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ी जहाँ फल विभिन्न प्रकार भित्तिभूमि आरंभ करी अनेक जिनस गुड़िक आग को अधिक होगाक जाउछि केंद्र सरकार तरफ एभली दिग गुड़ी को अधिक ध्यान दि जाइछि ओडिशा पर मध्य अनेक किछि घोषणा करा जाइछि अनेक किछि कुआ जाइछि ता सहित माइनिंग कॉरिडोर कथा कुआ जाइछि जहाँ ओडिशा पाई केंद्र सरकार चिंता करुछन्ति ओडिशा सहित दक्षिण भारतर किछि राज्य जो माइनिंग कॉरिडोर कथा केंद्र सरकार चिंता करिसेंती तेणु ये 10 बड़ कथा बजेट आम आपण सामना को आणुछु बिल्कुल बजेट प्रमुख अंश कौन रही प्रमुख घोषणा कौन रही आपंक टीवी स्क्रीन रे ओडिशा रे विरल मूर्तिका कार्य ओडिशा रे कार्यक्षम हेबो जातीय जलमार्ग 5 से तालचेर एवं अनुगुल सहित हेबो संयोगीकरण अर्थात जोगाजोग उपरे फोकस कलिंगनगर सहित संयोग हेबो पारादीप एवं धामरा रिजनाल सेंटर रे हेबो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से देशर सबु जिल्ला रे बालिका हॉस्टेल निर्माण नहीं मध्य लक्ष्य रखिछंती सरकार नड़िया उत्पादन बढ़िबा पई प्रमोशनल स्कीम अणाजिबो 15टी ऐतिह्य स्थलीर विकास करा 15टी ऐतिह्य स्थली उपरे किभली विकास करा ता उपरे मध्य होईछि योजना भेटनारी कॉलेज एवं हॉस्पिटल निर्माण करबा नै मध्य लक्ष्य रखिछंती केंद्र सरकार अर्थात खास करिकि स्वास्थ्य भित्तिभूमि एवं जोगाजोग उपरे रहिछि सर्वाधिक फोकस एठी एक छोट ब्रेक पाई आम रोचे ब्रेक पर खूब शीघ्र फेरिबा बजेट प्रमुख अंश बा हेडलाइंस को नहीं आम चर्चा आलोचना को आगू बढ़ाइबा बजेट आकार कौन हो पारे विगत वर्ष मानक बजेट आकार कौन थिला एथर कौन परिवर्तन हो पारे क्यों क्षेत्र उपरे सरकार केते फोकस रही से संपर्क में सूचना देवे लक्ष्मी नारायण निश्चित भाव में विभुरंजन जदि आम पुराना वर्षर बजेट को देखा ए वर्षर बजेट को कौन आशा कर आकलन करवा कहवा देखु आम 2024 और 25 वर्ष में जो कौ क्षेत्र में कौ सेक्टर में सरकार अधिक गुरुत्व देते बजेट घोषणा होगा पर स्टॉक मार्केट उपरे यार एक बड़ प्रभाव देखा मिली कारण स्टॉक मार्केट आम देखुले सकाल हलचल होता अर्थात आज बजार खोलिबा परे एवं जेतेबेले बजेट उपस्थापन होईछि स्टॉक मार्केट रे मध्य एक बड़ धरणर संशोधन होईछि एवं निफ्टी रे पाखापाखि 435 पॉइंट वर्तमान सुधा ह्रास पाइथिबा बेले 24,890 रे पहुंची भारतीय निफ्टी से भली सेंसेक्स 80,990 रे वर्तमान ट्रेडिंग करूछि एवं सेंसेक्स रे मध्य पाखापाखि 1.5% ह्रास आमे देखुछि अर्थात 1225 पॉइंट पाखापाखि सेंसेक्स रे खसिछि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रे 23 पॉइंट ह्रास पाई तेणु आज स्टॉक मार्केट उपरे जो मानकर नजर रही जो मैंने शेयर किना बिका करुले से अनेक मात्रा निराश होते जो मैंने स्टॉक मार्केट निवेशकारी थे से आज अनेक परिमाण में निजर टंका हराई कहले भूल हम ना बर्तमान सुधा पाखापाखि सेंसेक्स रे 1.21% ह्रास घटी बेले निफ्टी रे 1.31% बर्तमान ह्रास घटी 330 पॉइंट तलकू खसी निफ्टी कारण मार्केट आरंभ आज आम देखुले जिते बजेट गोटे पटे उपस्थापन होता एपटे मार्केट आरंभ होता से समय आम देखी मार्केट पॉजिटिव को आसीथिला मार्केट प्रायतः 100 पॉइंट रु अधिका बढ़ी किंतु अकस्मात पुणी थे शेयर मार्केट खसबार लगी बर्तमान ताजा अपडेट निफ्टी 24,970 रे ट्रेडिंग करुवा बेले बर्तमान 1.37% ह्रास घटी अर्थात 340 पॉइंट रु अधिक खसी निफ्टी से सेंसेक्स 1000 रु अधिक पॉइंट ह्रास घटी बर्तमान
81,200 उपरे ट्रेडिंग करुछि सेंसेक्स। तेणु मार्केट मध्य गोटे प्रकार आज धराशायी कहले भूल हम ना। बजेट गोटे पटे उपस्थापन होता बेले आशा करा जाउथिला भारतीय मार्केट हयतो ऊपर को उठी पारे, किंतु प्रतिबदल में आम देखुचे मार्केट बर्तमान धीरे धीरे तलक खसुची, जहाँ निवेशकारी एक चिंतार विषय नियति। आज विभू रविवार बजेट उपस्थापन होता एवं आज रविवार मार्केट मध्य खोला थिला, शेयर मार्केट खोला थिला। तेणु निवेशक माने बड़ा आशा करथिले कि केंद्र सरकार बजेट जिते उपस्थापन हम से मार्केट से कौन रिटर्न देव, किंतु एबे देखा मिलूँ कि मार्केट निरुत्साहित रही, मार्केट खसी, अर्थात सेंसेक्स और निफ्टी उभय बर्तमान ह्रास परिलक्षित होता जमापड़ी। तेणु आज ये बजेट प्रभाव सीधा सीधा मार्केट उपर पड़ुवार देखा मिलूँ। से निफ्टी हो सेंसेक्स हो उभय जगह एवं मार्केट क्रैश कर मार्केट ह्रास होइतवार देखा मिलूँ। तो बजेट पर मार्केट क्रैश करिछि। आज बड़ नजर थिला निवेशक मानक उपरे जेतेबेले बजेट रे इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं बड़ घोषणा कर जाउथिला, जेतु कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़िबो एवं वित्तीय श्रृंखला बढ़िबो, तापरे आहुरी ग्रोथ करिबो। एमएसएमई सेक्टर हो किंबा विभिन्न उद्योग हो से माने आगो को अधिक मार्केट तांकर एक्सपांड करि परिबो, अधिक से माने ग्रो करिवे। एवं बजेट रे ओडिशा को फोकस मिली। बजेट रे केंद्र मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र अर्थमंत्री कौन कहते कार्यक्रम हम कोरियर जातीय जलमार्ग ओडिशा रे कार्यक्रम हम जातीय जलमार्ग 5 गोटे बड़ सूचना। तालचेर आ अनुगुल सहित यहाँ संयोगकरण कर तालचेर अनुगुल सहित संयोगकरण हम, कलिंगनगर सहित संयोग हो पारादीप आ धामरा। ए बाबद आज घोषणा कर बजेट रे या फोकस दि जाए केमती जलमार्ग विकसित होगा द्वारा आहुरी अर्थनीति गति पाइब एवं जलमार्ग जरिया जेतु बेपार वाणिज्य बढ़ी, तेणु बंदर भित्तिक शिल्प को आहुरी बढ़ाई जलमार्ग कथा कहुई। आज बजेट रे यार मध्य अनेक गुरुत्व रही, यार मध्य अर्थ रही। कलिंगनगर सहित पारादीप धामरा को संयोग करा केमिति जलमार्ग जरिया आहुरी शिल्प विकास कर बाबद अधिक आलोचना करवा। मो सहित सुधांशु रंजन प्रधान अर्थनीति विशेषज्ञ जोड़ी होती। तो प्रधान आपन को स्वागत आलोचना को। ओडिशा पाई आज कौन कौन घोषणा होती बाबद टिके प्रथमे आपन ठार जानिबा चाहिबो, तापरे आज पूरा बजेट रो मुख्यांश गुडी को जानिबा। देखंतु जो वर्तमान केंद्र अर्थमंत्री जो बजेट उपस्थापना करिसंती सेथिरे ओडिशा समेत कर्नाटक गोवा आउ आंध्र प्रदेश यही भाया केतटा मिनराल सेक्टर जो स्टेट अच्छा ताकू नेकरी गोटे रेयर अर्थ मिनराल हब बा कॉरिडोर करिए बोली घोषणा करछंती। तालचेर अनुगुल आउ धामरा संगे जो संयोगीकरण हम तार जो परिप्रेक्षी से भी बजेट रे उपस्थापना करछंती। तो बेसिकली देखिए गले ओडिशा को आमर इंफ्रास्ट्रक्चर जति केमिति डेवलप करिवो, कारण आमर ओडिशा होची गोटे रिच मिनराल स्टेट। जो मिनराल स्टेट रो जो रॉ मटेरियल गुड़ाक ताकू नेकरी कमिंग जिनस जो डे गुड़ाक अन्य स्टेट को भी जाई परिबो ठीक भाव में, एठी भी तार मैन्युफैक्चरिंग जिनसटा ठीक रही परिबो। तो सेही को आखि आखि रखी सरल रे आपन ठारो बुझिया पई चाहिबी जे सुधांशु आपण सुनि परचोनी मते सुधांशु शुणी पार्टी आज्ञा मु गोटे कथा सरल रे बुझीबी ओडिशा पई जहा करा जाईची ता द्वारा ओडिशार लोक को कौन फायदा हम टिके सरल रे बुझे दिंतु। जदि चाकरी मिलवार अच्छे केते चाकरी मिलिवो, जदि ये सब संयोगीकरण फल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िला किंबा कोनोसी प्रकार उन्नति हैला तले ओडिशार लोक माने को प्रकार सुविधा पाइबे टिके बुझे दिंतु। देखो प्रथम है आमर बजेट रदि आखि आगे रखिकी ओडिशार लोक मानकर बेनिफिट लोक मानकर जो सुविधा असुविधा ये सब जिन को आम देखा। प्रथम है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जीवो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप द्वारा किछि जॉब क्रिएशन हम, किछि विभिन्न जगार इन्वेस्टमेंट भी आसीबो, ता द्वारा लोक मानक पाखरे चाकरी रो सुजोग बाहरिबो, ता द्वारा एठी मैन्युफैक्चरिंग जिनस किछि एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करि हबो, ता द्वारा आम मानकर जो रॉ मटेरियल रो एठी जो जिनिस गुड़ाक अच्छी ताकू नेकरी आमे केमिति आगामी दिन में ताकू प्रोड्यूस करि परिबा, से सब जिनिस निश्चित रूपे एटा गोटे सहायक हबो। ओके सुधांशु बाबू आ गोटे कथा बुझापी चाहिए, व्यक्तिगत भाव में जड़े अर्थनैतिक विशेषज्ञ हिसाब से आपण को ये बजेट टी कौ कौ दिगरु भल लगिला और कौ कौ दिगरु खराब लगिला?
देखो एटा बजेट एबे सरीबार 5 मिनिट बा 10 मिनिट पूर्व ही केवल माने जेतिकी सुनिचंदी सुधांशु जेतिकी सुनिचंदी आपण मुख्यमंत्री जेतल उपस्थापन करंती सेतेबेले संपूर्ण बजेटटा भी आसी न थाए संपूर्ण बजेटटा जेतेबेले एटा आसीबो तापर ही या ऊपर गोटे किछि दिग रखिले ही उचित मन करिवे तदन सुधांशु आपण जेतिकी सुनिचंदी से भितर आपण कोन लागिला कि छाडी देले निर्मला मैडम ना सब कहिचंदी ना ना किसी तो निश्चित छाड़ी मत लगुच कारण से सब सेंटेंस गुड़ाक मुझे बहुत क्लोजली वाच करूली से सब दिग गुड़ाक से कंप्लीट कर पारि ना सेटा भी संभव नुहे एते कम समय भितर भारतर गोटे एडा बड़ अर्थनीति को 1.5 घंटा भितर कंप्लीट करवा विभिन्न प्रकार पार्ट को रखिकी एटा केबे भी संभव नुहे तेणुक सी जी पारी द्वारा जी संभव कारण समय भितर जी जिन टच कर केवल से जिन ही कहुई निर्मला मैडम टच कर से भितर आपको सबुठारु पॉजिटिव पॉइंट कोटा लगिला जहाँ देखिकी लगिला जे एइथरे किछि गोटे यूनिकनेस अछि जो जिनस भारत को आगु नपाई हेल्प करिवो पर्टिकुलाली ए बजेट रे ताको कथाबार्ता रु बा ताको भाषण रु मते जति लागिला जे गवर्नमेंट वर्तमान फोकस करछि बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गुडा गोटे बेनिफिट गोटे करंट बजेट पर संगे संगे न थाए माने आज डेट रे जो बजेट उपस्थापन है तार बेनिफिट ता केवल गोटे वर्ष 2 वर्ष या भीतर न थाए कैपिटल बजेट घोषणा हवा परे परे स्टॉक मार्केट ऊपर मध्य यार एक बड़ प्रभाव देखिबा पई मिलिछि कारण स्टॉक मार्केट आमे देखुथिले सकाळु हलचल होतिला अर्थात आज बजार खोलिबा परे एवं जेतेबेले बजेट उपस्थापन होईछि स्टॉक मार्केट रे मध्य एक बड़ धरणर संशोधन होईछि एवं निफ्टी रे पाखापाखि 435 पॉइंट वर्तमान सुधा ह्रास पाइथिबा बेले 24890 रे पहुंची भारतीय निफ्टी से भली सेंसेक्स 80990 रे वर्तमान ट्रेडिंग करूछि एवं सेंसेक्स रे मध्य पाखापाखि 1.5% ह्रास आमे देखुछि अर्थात 1225 पॉइंट पाखापाखि सेंसेक्स रे खसिछि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रे 23 पॉइंट ह्रास पाइछि तेणु आज स्टॉक मार्केट उपरे जो मानकर नजर रहिथिला बा जो माने शेयर किना बजेट घोषणा हवा परे परे स्टॉक मार्केट उपरे मध्य यार एक बड़ प्रभाव देखिबा पई मिलिछि कारण स्टॉक मार्केट आमे देखुथिले सकाळु हलचल होतिला अर्थात आज बजार खोलिबा परे एवं जेतेबेले बजेट उपस्थापन होईछि स्टॉक मार्केट रे मध्य एक बड़ धरणर संशोधन होईछि एवं निफ्टी रे पाखापाखि 435 पॉइंट वर्तमान सुधा ह्रास पाइथिबा बेले 24890 रे पहुंची भारतीय निफ्टी से भली सेंसेक्स 80990 रे वर्तमान ट्रेडिंग करूछि एवं सेंसेक्स रे मध्य पाखापाखि 1.5% ह्रास आमे देखुछि अर्थात 1225 पॉइंट पाखापाखि सेंसेक्स रे खसिछि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रे 23 पॉइंट ह्रास पाइछि तेणु आज स्टॉक मार्केट उपरे जो मानकर नजर रहिथिला बा जो माने शेयर किना बिका करूथिले से माने मध्य अनेक मात्रा रे निराश होइथिबे एवं जो माने स्टॉक मार्केट रे निवेशकारी थिले से माने मध्य आज अनेक परिमाण रे निजर टंका हराइछंती कहिले भूल हबो नै वर्तमान सुधा पाखापाखि सेंसेक्स रे 1.21% ह्रास घटिथिबा बेले निफ्टी रे 1.31% वर्तमान ह्रास घटिछि एवं 330 पॉइंट तलकू खसिछि निफ्टी कारण मार्केट आरंभ रु आज आमे देखुथिले जेतेबेले बजेट गुटे पटे उपस्थापन हेउथिला एपटे मार्केट आरंभ होइथिला से समय आमे देखिथिले मार्केट पॉजिटिव को आसीथिला मार्केट प्रायतः 100 पॉइंट रु अधिका बढ़िथिला किंतु अकस्मात पुनी थरे शेयर मार्केट खसिबारे लागिथिला एवं वर्तमान रो ताजा अपडेट निफ्टी 24970 रे ट्रेडिंग करुथिबा बेले वर्तमान 1.37% ह्रास घटिछि अर्थात 340 पॉइंट रु अधिक खसिछि निफ्टी से भली सेंसेक्स मध्य 1000 रु अधिक पॉइंट ह्रास घटिछि वर्तमान 81200 ऊपर ट्रेडिंग करुछि सेंसेक्स तेणु मार्केट मध्य गुटे प्रकार आज धराशायी कहले भूल हबो नाही बजेट गुटे पटे उपस्थापन हेउथिबा बेले आशा करा जाउथिला भारतीय मार्केट होय तो ऊपर को उठी पारे किंतु प्रतिबदल रे आमे देखुचे मार्केट वर्तमान धीरे धीरे तलकू खसुछि जहाँ निवेशकारी एक चिंतार विषय नियति आज विभू रविवार बजेट उपस्थापन होता एवं आज रविवार मार्केट मध्य खोला थिला शेयर मार्केट खोला थिला तेणु निवेशक माने बड़ा आशा करथिले कि केंद्र सरकार बजेट जिते उपस्थापन हम से मार्केट से कौन रिटर्न देव किंतु एबे देखा मिलूँ कि मार्केट निरुत्साहित रही मार्केट खसी अर्थात सेंसेक्स और निफ्टी उभय रे वर्तमान ह्रास परिलक्षित होता जमापड़ी तेणु आज ये बजेट प्रभाव सीधा सीधा मार्केट उपर पड़ुवार देखा मिलूँ से निफ्टी हो सेंसेक्स हो उभय जगह एवं मार्केट ह्रास कर मार्केट ह्रास होइतवार देखा मिलूँ तो बजेट पर मार्केट क्रॉस करिछि आज बड़ नजर थिला निवेशक मानक ऊपर जेतेबेले बजेट रे
इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं बड़ घोषणा करा जेहेतु कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़िबो एवं वित्तीय श्रृंखला बढ़िबो तापरे आहुरी ग्रोथ करिबो एमएसएमई सेक्टर हो किंबा विभिन्न उद्योग हो से माने आगो को अधिक मार्केट तांकर एक्सपांड करि परिबो अधिक से माने ग्रो करिवे एवं यार फलाफल शेयर मार्केट उपरे कौन पड़ो तापर नजर रही किंतु शेयर मार्केट सेते उत्साहजनक आज रहीनी निरुत्साहित फलाफल देखा मिली बजेट्र ये प्रभाव शेयर मार्केट रे पड़ी जो शेयर मार्केट एवं तलमुहा रही मार्केट क्राश होती बजेट आगत पर अन्यपटे आयकर उपरे रही थाए समस्त नजर एवं आयकर उपरे आशा रही आकलन करा स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ी पारे आयकर सीमा बढ़ी पारे किंतु एसबू उपरे केंद्र सरकार चुप रही अर्थात अर्थमंत्री स्पष्ट करिसेंति कि आयकर सीमा रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन हेबो नाही किंतु आयकर पैठ करबा केमिति सरल होई पारिबो अर्थात रिटर्न फॉर्म केमिति सरल एवं सहज होई पारिबो ता उपरे सरकार गुरुत्व दैछंती कारण आमे देखिथिले गत वर्ष बजेट रे घोषणा करा जाइथिला आयकर सीमा 12 लाख पर्यंत अर्थात नुआ टैक्स रिजिम रे ता सहित 75,000 टंकार स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाइथिला अर्थात 12,75,000 टंका पर्यंत आपणकर जदि रोजगार अछि ताहेले आपण कोनोसी टिकस पैठ करिवे नाही एवं चलित थर मध्य ताहा ही बलवत्तर रहिबो कारण इनकम टैक्स स्लैब रे बा स्टैंडर्ड डिडक्शन रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन होई नाही एहा बाद जुलाई 31 तारिख आयकर रिटर्न रो शेष दिन बा शेष समय रखा जाइछि एवं आयकर स्लैब रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन होई नाही आ आयकर देउथिबा लोकंक पई दुईटी व्यवस्था करा जाइछि। अच्छा विभुरंजन एबे ये बजेट आगत परे को जिनस सस्ता है को जिनस महंगा है तार मध्य चित्र आम आनिबा डायबिटीज और कैंसर परी रोगर मेडिसिन गुड़िक सस्ता हे बोली कहुई कैंसर 70टी मेडिसिन उपरे आ सीमा शुल्क लागू हेब नाही तेणु महंगा होइछि मद आ बैटरी सस्ता है मद एबे रेट बढ़ी 2035 सुधा पाई न्यूक्लियर पावर कथा मध्य कहुला बैटरी सस्ता हेब जोता मध्य सस्ता हेब डायबिटीज और कैंसर परी रोगर मेडिसिन सस्ता हो बोली आशा थिला एवं पुणी थे बजेट रे से भली प्रतिफलन देखा मिली 70टी कैंसर मेडिसिन उपरे सीमा शुल्क लागू होना जो तार रेट कम 2035 जो व्यवस्था रही से परिवर्तन होती बैटेरी तैयारी सामग्री गुड़िक सीमा शुल्क छाड़ कर तेणु बैटेरी रेट कम बायोगैस मिश्रित सीएनजी सस्ता है एयरक्राफ्ट निर्मित सामग्री उपरे सीमा शुल्क छाड़ कर सामरिक विमान निर्माण सामग्री उपरे आमदानी शुल्क छाड़ हेब सुना और रूपा महंगा हेब बोली कहुछि 2 ରୁ 3 दिन धरी सुना रूपार दर कमी आसुथिला किंतु आज बजेट परे पुणी थे कहुछि कि सुना रूपार दर महंगा हो पारे विभुरंजन ये बड़ अपडेट आज बजेट उपरे समस्त नजर रही क्यों जिनस गुड़िक सस्ता हे क्यों जिनस महंगा हे बिल्कुल उदित एवं सब बेले जनसाधारण अपेक्षा रही थाए बजेट पर कौन सस्ता हे कौन महंगा हे तेणु आम दर्शकों को पूरा चिठा देखा चेष्टा करुचु सरकार घोषणा पर बजेट उपस्थापन पर यार प्रभाव विभिन्न द्रव्य बा विभिन्न सेवा उपरे कौन पड़ पारे 2035 न्यूक्लियर पावर गुड्स टिकस छाड़ करा जाइछि बजेट उपस्थापन पर एक स्पष्ट कि बैटेरी एवं जोता सस्ता हेबापई जाउछि सेही भली डायबिटीज एवं कैंसर मेडिसिन मध्य सस्ता हेबो बजेट रे यार मध्य प्रतिफलन होइछि कैंसर रो 17टी मेडिसिन उपरे लागिबोनी सीमा शुल्क सेही भली मद आहुरी महंगा हेबापई जाउछि एवं अन्यपटे बैटेरी आहुरी सस्ता हेबापई जाउछि अर्थात सरकार किभली भाबरे पोल्यूशन फ्री रहिबो समाज बा पोल्यूशन फ्री केमिति हेबो ता उपरे फोकस करि आसुथिले एवं बजेट रे मध्य यार प्रतिफलन आमे देखुचे सेही भली स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रे डायबिटीज एवं कैंसर मेडिसिन मध्य आगामी समय रे सस्ता हेबापई जाउछि कारण कैंसर रो 17टी मेडिसिन उपरे सीमा शुल्क सरकार छाड़ करूछंती जहा फल रे मेडिसिन रो दाम कमिबो एवं जे माने मेडिसिन किणुचंती सेमानंक पॉकेट को मध्य कम बाधिबो सेही भली बैटेरी एवं जोता मध्य आगामी समय रे सस्ता हेबापई जाउछि कारण ए दिगरे मध्य सरकार बड़ पदक्षेप नैछंती एवं सबुठु बड़ खबर हेउछि डायबिटीज एवं कैंसर रोगी जो माने अछंती जो मानकर संपर्क अछंती सेमानंक पई ए खबर निश्चय आश्वस्ति प्रदान करिवो कारण कैंसर रो प्राय 17टी मेडिसिन आहुरी सस्ता हेबापई जाउछि बजेट रो बड़ 10 कथा ओडिशा विरल मृत्तिका खनिज बाबद रे चिंता कराई बजेट रे कंस्ट्रक्शन और इन्फ्रा उपरे स्कीम हेबो सेमीकंडक्टर 2.0 पई प्रस्ताव दिया जाइछि बायो फार्म पई 10,000 कोटी रो निवेश रही ये बजेट रो बड़ 10 कथा एसएमई प्रोत्साहन पई 10,000 कोटी टंका दिया जाउछि
छोट उद्योगी 2000 कोटी टंकार व्ययबराद होइछि। इन्फ्रा रिस्क ग्यारंटी फंड गठन करा 7टी नुआ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर योजना करा 2027 वर्ष कैपेक्स 12.2 लाख कोटी सिटी इकोन रिजन स्कीम बड़ व्यवधान तेबे बजेट ये बड़ 10 कथा आम सामना को आणुचु केउ क्षेत्र में एथर बड़ व्यवराद केंद्र सरकार तरफ केउ क्षेत्र गुड़ी को अधिक गुरुत्व दि जाएगी जमती कि विकास और रोजगार टैक्स उपरे समस्त नजर थिला टैक्स रे सेमती किछि जदि बड़ परिवर्तन हेइनी किंतु सरलीकरण करने को चेष्टा करा जायछि ता सहित आउ केउ उद्योग गुड़िक जेहेतु कैपिटल एक्सपेंडिचर अधिक बढ़ी अर्थात खर्च अधिक बढ़ाइबे भित्तिभूमि आरंभ कर विभिन्न प्रकार क्षेत्र में केंद्र सरकार तरफ खर्च बढ़िबो एवं यह अर्थनीति को आहरी गतिशील करिवो जो कथा बारंबार कहा जाउथिला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर केते रहइबो एथर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ी जहाँ फल विभिन्न प्रकार भित्तिभूमि आरंभ करी अनेक जिनस गुड़िक आग को अधिक होगाकू जाउछि केंद्र सरकार तरफ एभली दिग गुड़ी को अधिक ध्यान दि जाइछि। ओडिशा पर मध्य अनेक किछि घोषणा करा जाइछि अनेक किछि कुआ जाइछि ता सहित माइनिंग कॉरिडोर कथा कुआ जाइछि जहाँ ओडिशा पाई केंद्र सरकार चिंता करुछन्ति ओडिशा सहित दक्षिण भारतर किछि राज्य जो माइनिंग कॉरिडोर कथा केंद्र सरकार चिंता करिछन्ति तेणु ये 10 बड़ कथा बजेट आम आपण सामना करूछु। बिल्कुल बजेट प्रमुख अंश कौन रही प्रमुख घोषणा कौन रही आपण टीवी स्क्रीन रे ओडिशा रे विरल मूर्तिका कार्य ओडिशा रे कार्यक्षम हेबो जातीय जलमार्ग 5 से तालचेर एवं अनुगुल सहित हेबो संयोगीकरण अर्थात जोगाजोग उपरे फोकस कलिंगनगर सहित संयोग हेबो पारादीप एवं धामरा रिजनाल सेंटर रे हेबो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से देशर सबु जिल्ला रे बालिका हॉस्टेल निर्माण नहीं लक्ष्य रखिछन्ति सरकार नड़िया उत्पादन बढ़िबा पई प्रमोशनल स्कीम अणाजिबो 15टी ऐतिह्य